Hello and welcome back to A Talks. Today you are again with Architect Avitesh and we are going to organize our 10th episode of A Talks with Avitesh. So I would like to welcome all of you and today we are going to talk about cement manufacturing and cement industry. Of course, we'll talk about how to choose cements and all. So it will be very good for students also and as well as who are working in field to know about cement grades and all the manufacturing process of cements. For this talk, I would like to invite engineer Avdesh Kumar Mishra, who did his bachelor degree in 1998 from Government Engineer College and Rural Technology Gorakhpur. He started career as a trainee in 2003 to 5 and after that continue in same organization with different level assignments sub-departments. He had constructed RCC chimney slab from work Achi Glass Factory, ITC Factory, Roorkee and Haridwar as a challenge. He had joined JK Cement Industry in 2010 as area in charge in customer technical services at Regional Marketing Office Ghaziabad. He has completed many industrial and commercial projects pan India level. He also worked for more than 17 years, 2003 to 2020, as different level construction field and technical services. He has involved in techno marketing services for as attend national and international seminars, tech talk also. So he has a big experience in cement industry and it will be very grateful to talk him about cement and yes we would like to know that which type of cement we can use and where and what is the process of manufacturing and all the things. So let's call him and he is going to start. Thank you so much, sir. Abdesh sir, I would like to invite you for this talk and you are welcome on my platform eTalks with Avitesh. And yes guys, don't forget to like, share and subscribe. Keep learning, keep enjoying. Yes sir. Over to you sir. So here we are going to start with Avdesh Kumar Mishra who is going to tell you about cement manufacturing and all the things. So I would like to welcome Avdesh Kumar Mishra. Sir, please over to you and you can start your presentation now. Firstly, and good afternoon, everyone. Now we are, I am self A.K. Mishra and looking after UP Uttarakhand as a stated technical customer tech is a cement the nation in 1972. बेसिकली 1975 से जेके सीमेंट अभी सीमेंट इंडस्ट्री में है एटी थ्री से इसमें जेके का चल रहा बट आई थिंक सीमेंट इंडस्ट्री में 1972 से स्टार्ट है सो अगेन जस्ट ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड वी आर सर्चिंग about the few people are regarding the jobs and business. So just PM Dream project now after unlock 1, 2, 3 is going on. So PM project PM Dream project is Atmanirbhar. So JK Cement basically is involved as a Atmanirbhar, PM project Atmanirbhar. So Indian economy is badly suffered due to the corona pandemic situation and this is going to the impact in coming day. In India also problem has for impact and it is now at a recorded high of 27.1%. Lots of people are continuously
losing job or shut down their business and returning back to their native place, rural India. These unemployed try to settle their little बहुत सारे पीपल उसके गांव के में रूरल से ट्राई कर रहे हैं नए बिजनेस सेटअप के लिए कि आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट और उसने एक अपना लिए पार्ट वहां पे पार्टिसिपेट कर रहा है. As in the current scenario, getting job, especially in the rural area, is a big challenge. More and more people will think on the starting their own startup. As many of the industries and business are badly affected, most of the people will think to the adopt business, which may not affected in the corona last long. Atmanirbhar, we can see above scenario as a win-win situation for the both of us, as these parties are looking for some sustainable business and we are searching a good business partner, especially in rural areas. In project, voice is clear, Yes, sir. Yes, sir. Avitesh? Yes, sir. Clear. Yeah, yeah, yeah. In project Atmanirbhar, our work will not completed just in appointing the dealers, retailers, and others. But we shall also educate, support, and train these parties like the civil engineering students and other field in all the required areas to settle down continuously support in the time they are having full understanding of the business along with the professionals, dealers, all the basically, history of cement is starting from the Portland cement. Portland cement was invented in 1824 by the Joseph Aspedin. In 1824, Joseph Aspedin is a bricklayer and mason in Leeds, England. Took out a patent on a hydraulic cement that he called Portland cement because its color resembled the stone quarried on the Isle of Portland of the British coast. Portland cement is a leading building material worldwide. It ranks second in the volume among the industry's product manufactured in the world. Concrete with the cement is an integral ingredient in the most widely used construction material. I think that's clear. Yes, Why? sir. Yes, sir. Clear. Next, cement is a global cement production, and as per the capita cement consumption in 2019, China is the most users of the cement and production also. Approximate is condition of India. Per capita consumption of India in financial year 13 is 230 kg and 1919 is approx by 450 or something 500 kgs per capita person. So again, what is cement? Basic cement finally the powder is the pound it is an organic powder that is and material. In organic pipe, heated oil temperature produce individual propellant rotis and yeah. So raw material means and sources. Is acid, it limestone and so yeah. So gypsum, calcium sulfate, like mineral gypsum, marine gypsum, chemical gypsum. Coal has high calorific values because coal
प्रोड्यूस फ्रॉम द सैनिटेशन डिपार्टमेंट लाइक कचरा, जितने भी कचरे होते हैं इनको सीमेंट प्लांट के अंदर जो है फ्यूल के लिए यूज करते हैं। तो आजकल जितने भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं या गवर्नमेंट ऐसे जो सैनिटरी डिपार्टमेंट होता है, हेल्थ एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट, कचरे के लिए हम लोग बात करते हैं और प्लांट को लेके आते हैं फ्यूल के लिए, जिनकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू अच्छी होनी चाहिए। हाई कैलोरीफिक वैल्यू जिनकी अच्छी होगी उसको हम लोग यूज करते हैं। आगे, so manufacturing process, there are the two types of the manufacturing process. One is the wet process and other is the dry process. Wet process is basically related to the mix containing homogeneous constituents, and 30 to 40% of the water is heated to 1510 degrees centigrade, and in a revolving slightly inclined clean oxide of silica, calcium, aluminium combined to the form of the cement clinker. Basically, clinker is the heart of the cement industries. Second, dry process. We can use dry process and wet process both, but the dry process is the economical process. The dry process is the homogenized mix is fed into the clay and burned into the dry state. Considerable saving in the fuel consumption, because it is the fuel consumption of our the plant. But workplace is the very dusty है। बहुत ज्यादा जो है डस्ट आने के चांसेस वहां पे रहते हैं कि हम ड्राई प्रोसेस में करते हैं, बट फ्यूल का कंजम्पशन काफी कंट्रोल रहता है। अनदर sequence of the operations for manufacturing of cement. First is blasting. So first is blasting. Rakes are used to placing subsequent blasting of the from L place and and next load on the dumper, bias of the excavator and the primary. Next, crushing. The crushing is done in the two stages, in primary crusher and the secondary crusher, to produce the stone first to the about 5 inches, and then it to be, and there are the vibrating screen between the two crushers. Storage. After secondary crusher, each raw material is stored separately in the plant area. So, like, the size of the stone is our priority, because we can control the size, then we can produce the good quality of cement. Again, cement manufacturing as drawn by the figure, new technology in the dry process cement, because process important. This process we can choose also because of the fuel consumption is low, जैसा कि हमने अभी पहले बताया. So this is just a map. So I think raw material consists commissioned of limestone, rocks, maize, and oxygen cells and cells, clays, and iron cores. I then primary crusher and then secondary crusher. Then raw mills convey to the grinding mills also, जहाँ पे हम उसको ग्राइंड करने के लिए फाइनली लेके जाते हैं. Again, next, raw grinding. The raw grinding material are then proportionate and fed into the roller mill for the grinding. The raw mix so pumped into the mixing and blending silos, and then into the ground raw material storage. Preheating and calcinization, because calcinization is the main part of also, because the clinker is a heart of the cement. Then clinker, we are obtaining clinker by the process of calcinization. So preheating and calcinization, before going into the preheater, the dust generated in the grinding process separated by the dust collectors, the raw materials then enter in the preheater also. Again is the cement manufacturing process. So, like clinker production. Clinker production is the main. Kindly just read the double PPTs also need to delete the PPTs. So clinker production, cement is made from the clinker which is produced in the kiln.
Preparation, also called by the processing, consists of the preheater with the calcinizer, clean, and third is cooler. Preheaters, again, preheaters, the material is heated up to 820 to 900 degrees centigrade in the preheater lower cyclone by hot clean gas. And other things, all free and absorbed water evaporate and the material start decomposing also. Calcinizer, and again, next, Avitesh. Yes, sir. Calcinizer. Calcinizer is basically hot material comes into the calcinizer from the tower cyclone, like given in the figures, shown in the figures. The raw materials is heated 8 degrees centigrade to 900 degrees centigrade, and initial chemical reaction takes place, causing further decomposition of the raw material. About 75% calcination takes place in the clean operation process. Like clean operation is related to the burning process. Burning process is also main chapter of the cement industry, because all the raw materials need to be fully burned, so that it's a clinker obtain pure clinker. So basically in process, the raw materials gets converted to the clinker in the form of four main zones in the kiln. The temperature also is kept between the 1350 to 1450, also 1500 we can take. The four main zone kiln are: first, calcination zone. The material is fully calcinized. Second, sintering zone. As a result of the chemical reaction, the raw materials converted into the liquid phase. Third, burn zone. The material is converted to the clinker in the soup. And again, fourth, cooling zone. Cooling zone basically related to the clinker, and clinker is zone. It starts cooling as the material is not in the contact with the flame, because it is a high temperature. हम वहाँ पे रह नहीं सकते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर होता है, तो हमें उसको ठंडा करना पड़ता है, कूल करना पड़ता है, so that we can use the next process, grinding process. And again, burning zone is kept at the 13,000, 1500, 1450 or maybe 1500 degrees centigrade we can consider. And the amount of the carbon monoxide is to monitor, because it is the harmful element of the cement industries. Again, clinker quality. Clinker quality is ensured by the monitoring clean speed, clean fed into the tempered and drafted. Clinker quality is determined by the free line percentage and liter weight, also calculated. Free line should be the below 2%, and liter weight will be calculated between the 1180 to 1200 grams. We can take it. Clinker quality also depend on the burnability index. Burnability, because the burning part is the main part of the cement industry. Cooler. The function of the cooler is heater. Recuperation discharges from the kiln. The recuperated heat with air is used in the kiln and pre-calcinizer for combustion of coal. Clinker coming at the 900 degrees centigrade is cooled by 10 degrees to cool to for the regions. हम इसको किस रीजन में ले सकते हैं? हॉट क्लिंकर इज डिफिकल्ट द कन्वे, ले कर नहीं सकते हैं. यदि क्लिंकर हॉट है तो कन्वे पर नहीं ले आ सकते हैं. हॉट क्लिंकर इज डिफिकल्ट टू द ग्राइंड, तो उसको ग्राइंड नहीं कर सकते हैं. थर्ड, कूलिंग इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ सीमेंट. तो हम type of cooler or rotary cooler. Here are the
First, rot cooler, second, light cooler, and third, grate cooler, fourth, soft cooler. So again, finished grinding mill, the clinker and gypsum which are stored separately or fed into the grinding mill, where the clinker and gypsum are finally ground to the make pure cement. Otherwise, other additives can also be added to make blended cement like fly ash and calcinized clay, fly ash and husk rice also. The storage cement is stored in silos. We will करते हैं kilos में. Packing and dispatches. Dispatches are made either in a bulk or the packed in bag. बैग में भी ले सकते हैं. इनके लिए अभी हम लोग जो है उसको जैसा अभी फ्लाई एश का टैंकर होता है उससे भी हम लोग सीमेंट को सप्लाई करते हैं बिकॉज अभी ओपन में भी मिलता है. So dispatches are made either in bulk or packed in the cement bags, which take place in the bagging plant also. Again, the vertical roller pre-grinding mill system. VRM system is basically in the cement industries mainly used for the pre-grinding of the clinker, final grinding of the limestone, coal and slag. VRM are also available for final grinding of the clinker. The VRM we are going to discuss is pre-grinder called as a VREMS. Again, next, vertical roller pre-grinding mills for pre-grinding the clinker. Grinding is done by the exerting force through the roller or in the clinker between roller and table by the next. Operating principle of the clinker pre-grinding mills. Because the clinker को हम grind करते हैं और अच्छा grind होना चाहिए so that cement की quality अच्छी हो. So compressive stresses produce crushing action on the clinker. Friction causes roller to the rotate on the clinker bed and generate shearing stresses also. Shearing stresses produce grinding action on the clinker. Next, mechanical action like impact and shear occurred between the grinding media and fed materials and also between the particles of the fed material themselves to some extent, and the consequently size reduction is achieved. The size of the fed material is gradually reduced as it is hydration of the cement compounds. Basically, compound is C3S, C2S, C3A, C4A, and 3 days responsible for the heat of hydration, 3 days and 90 days. 3 days C3S is 58 and 90 days 104, C3S 12 and 90 days 42, C3A 212 and 90 days 311, C4AF 69 in 3 days and 98 is 90 days. For normal cement, approximately 50% of the potential heat is liberated within the first 3 days and 90% within the first 3 months of the hydration. It generally produces 80 to 90%, 90 calories per gram in the 7 days and 90 to 100 calories in the 28-day grams. देन हम सीमेंट को भी प्रोजेक्ट पर लगाते हैं, बहुत सारे डिफेक्ट्स आते हैं. सो आई अगेन डिस्कस अबाउट द ट्रबल शूटिंग डिफेक्ट्स इन द कंक्रीट. व्हाट डिफेक्ट्स आकर आफ्टर द यूजिंग ऑफ सीमेंट और इन कंस्ट्रक्शन आफ्टर द कंस्ट्रक्शन एंड व्हाट रेमेडीज एंड व्हाट कॉज वी कैन डिस्कस. इंट्रोडक्शन. वन मिनट. प्रोजेक्ट डेंजरस. यदि स्ट्रक्चर में डिफेक्ट होता है तो काफी इसमें प्रॉब्लम आता है. Construction defects is which makes a project dangerous and unsafe also. It is also described as a fault of imperfection in the construction work and failure of the building component parts. Cause of defects, बिकॉज ये कोई भी डिफेक्ट देखो तो सीमेंट इंडस्ट्री या सीमेंट की वजह से नहीं आता है. बिकॉज पुअर वर्कमैनशिप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुअर वर्कमैनशिप एंड लो और हाई वाटर सीमेंट रेशियो as done by the customers. So
So cause of the defects, basically four main reason is the cause of defects. Defects in design, यदि डिजाइन में कोई डिफेक्ट्स होता है, another defects due to workmanship, यदि workmanship में डिफेक्ट्स है, defects due to the quality of material used for construction, defects caused due to the environmental condition. अभी क्या टेम्परेचर होता है, प्रॉब्लम है, जब कोल्ड वेदर होगा तो भी प्रॉब्लम होता है, तो ऑल्सो एनवायरमेंट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफेक्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स. So again, troubleshooting and defects in the concrete. Some defects, just we are observing some defects in the concrete field. First is dust of the concrete, dusting of the concrete. Second, cracking. Third, blistering. Fourth, efflorescence. And fifth is honeycomb. Dusting of the concrete. Dusting is the condition where a fine powder comes off the surface of the concrete. कंक्रीट के ऊपर यदि ऐसा फाइनरी पाउडर्स दिखाई देता है या हाथ को हम उस पे जस्ट रबिंग करते हैं तो हाथ में ऐसा पाउडर फॉर्म दिखता है, दिस इज डस्टिंग डिफेक्ट्स. सो इट इज काज. इसके क्या काज हो सकते हैं? फर्स्ट, कंक्रीट मॉर्टर विद द हाई वाटर कंटेंट. Second, use of the excessive fine and inadequate cement content. Third is when the surface work prematurely. Fourth, rain of the fresh concrete. Rain or fresh concrete surface before the concrete has set. हमें कंक्रीट में कहीं बारिश हो जाता है, रेनी सीजन्स में हम कंक्रीट करते हैं, जस्ट रेन्स की वजह से भी कंक्रीट में प्रॉब्लम आता है. एंड अगेन द फेलियर टू अंडरटेक प्रॉपर क्यूरिंग में आल्सो भी कॉज डस्टिंग. हम उसको अर्लियर क्यूरिंग कर देते हैं तो भी इशू रहता है. सो नाउ हाउ टू प्रिवेंट इट? अवॉइड एडिंग वाटर टू द कंक्रीट एंड मोर्टार. हम सभी लोगों से कहते हैं कि कभी भी सीमेंट और कंक्रीट के साथ पानी को कम यूज करना चाहिए. बेसिकली दिस इज द मेन रीजन. सो avoid adding water to the concrete and mortar. Do proper mix proportion. Do not work to the surface too early while bleed water in the presence. Do not overwork to the concrete because this will also bring fine materials to the surface. When rains is expected or is likely, take decisive action to protect the surface beforehand. हम उसको जो है किसी पन्नियों से ढक सकते हैं कि कभी रेन से या बरसात आता है या बारिश होना शुरू हो जाता है ड्यूरिंग कंक्रीट, तो वी कैन कवर विद द पॉलीथीन शीट आल्सो. Always adopt a good curing procedures as early as possible. Then repair and how to repair it. Minor dusting can be rectified by the applications or a sealer that penetrates to the concrete. It is also bond the thin weak layer on the surface of the base concrete below. Most severe case will require to the complete removal of the weak top layer with a concrete grinder. तो हम बेसिकली देखें तो हम इसको डस्टिंग ऑफ कंक्रीट को ठीक कर सकते हैं और प्रिकॉशन भी ले सकते हैं. हमें कम जो है वाटर सीमेंट रेशियो को कंट्रोल करना चाहिए, कम जो है सीमेंट में पानी को कम डालना चाहिए बेसिकली. और यदि बारिश का समय होता है या ऐसा बरसात का मौसम आता है या कोई भी क्लाइमेट कंडीशनल चेंजेस होते हैं, इसमें हमें उसको कवर करना चाहिए, सेव करना चाहिए कंक्रीट. सो अगेन नेक्स्ट, क्रेजिंग. क्रेजिंग just seen in figure. Crazing. What was the crazing? Again, ये क्रेजिंग कंक्रीट सरफेस इज ए नेटवर्क ऑफ वेरी शैलो फाइन क्रैक्स अक्रॉस द सरफेस. इसमें बिल्कुल फाइन क्रैक्स जो है पूरे सरफेस पर दिखाई देता है एंड जिगजैग, एंड इट इज आल्सो द जिगजैग कंडीशन. Cause cracking is caused by the minor surface shrinkage is rapid drying condition. बहुत जल्दी उसका सरफेस ड्राई होता है तो ऐसा क्रैक्स आने की संभावनाएं होती हैं. और इट इज द लो ह्यूमिडिटी एंड आर इज द हाई टेम्परेचर. बोथ केसेस कैन बी occurs this type of the defects. Alternative, wetted and drying.
alternative wetting and drying, mixed to wet and lack of the adequate curing. Crazing also results when neat cement are used to soak up excess water and are traveled into the surface. बहुत ज्यादा हम जो है उसको ट्रैवलिंग करते हैं सरफेस को, तो भी इस तरह के क्रेजिंग आने के चांसेस होते हैं। प्रिवेंशन इसके लिए क्या कर सकते हैं? अडॉप्ट ए गुड क्यूरिंग रिजीम एंड स्टार्ट इट अर्ली। अच्छे क्यूरिंग के मेथड्स को लेना चाहिए था। डू नॉट यूज सीमेंट टू कलर सरफेस, हार्डनेस टू सोक अप वाटर एंड लाइन टू traveling of the limit to the traveling of concrete. Avoid adding of water to the mix. बाद में जो कंक्रीट में हम वाटर डालते हैं, वाटर ऐड करते हैं, दिस इज आल्सो क्रिएट ए प्रॉब्लम और क्रिएट ए डिफेक्ट इन द कंक्रीट आल्सो। सो repairs may be necessarily because crazing usually does not weaken concrete. It is unacceptable when the surface coating of paint and other overlay sealers can be applied to the cover and or the conceal the cracks. Next, blistering. Blistering. Just also shown in the figures. Blistering and what is the regions, prevention and cause again. Next. Blistering or hollow, low-profile bumps, swellings of the concrete surface filled with the either air or bleed water under traffic, both vehicles or foot traffic. Those blisters, cracks, and the surface mortar break way, exposing to the concrete underneath. Caused the finishing of the concrete was carried out the early by the traveling. इसको टाइम से हमें कंक्रीट की सरफेस को फिनिश करना चाहिए यदि इस प्रॉब्लम से हमें बचना है तो। ट्रैपिंग इन द ब्लीडिंग वाटर विच कंटिन्यू टू द राइज, causing the blistering under the surface. This occurs particularly in this thick slab or on hot weather, windy days when the surface is prone to the premature drying. इसके लिए इस प्रॉब्लम को हमें ठीक करने के लिए पहले ही हम कंक्रीट में चारों तरफ से भी हम उसको हम वाइंड से जो है भी हम सेव कर सकते हैं, चारों तरफ उससे पिन्नी लगा करके या पॉलीथीन से हम कवर कर सकते हैं आउटर साइड को, तो वी कैन आल्सो कंट्रोल द ब्लिस्टरिंग। सो प्रिवेंशन, द सरफेस ट्रीटमेंट ऑफ द कंक्रीट शुड बी कैरीड आउट ओनली आफ्टर द कंक्रीट हैज हार्डेंड। द रैपिड ड्राइंग ऑफ द कंक्रीट should be prevented. The rate of the drying can be reduced significantly by the installing windbreak, protective and sunshade also. In case of the conditions are very hot, then the concreting can be carried out during cooler time of the day and night. यदि कुछ मौसम में कुछ ठंडा हो या हमारा क्लाइमेट ऐसा ठंडा हो, डे नाइट जब भी मिलता है समय हमें करना चाहिए, हॉट टाइम में नहीं करना चाहिए। If blisters are forming, delay traveling as long as possible to take step to the evaporation. Evaporation से कंक्रीट को बचाते हैं तो वी कैन ऑल्सो हम इसको ब्लिस्टरिंग से सेव कर सकते हैं। अगेन एफ्लोरेंस जिसे हिंदी में बोलते हैं लोना लगना, ये एक बहुत बड़ी बीमारी है जो इंडिया में कहीं पे भी प्रॉब्लम आता है, लाइक यूपी में भी है, हर स्टेट में भी प्रॉब्लम आता है और बेसिकली कस्टमर इसके लिए काफी परेशान से रहते हैं। तो जस्ट मैंने इसको कैप्चर कर रखा है कि हम इसको कैसे इसको रेक्टिफाई करेंगे। सो व्हाट इज अबाउट द फ्लोरेसेंस? Efflorescence is a white crystalline deposit sometimes found on the surface of the concrete. Soon after it is the finish of appear or poured in the porous concrete. Porous concrete रहेगा तो भी प्रॉब्लम आ सकता है। Cause mineral salts sometimes present in the water. यदि हमारे वाटर में जो हम क्यूरिंग करते हैं या जो ऐड करते हैं यदि उसमें मिनरल साल्ट्स है तो we can occur this problem. These salts collect on the surface and evaporate. Water must be in contact with the moisture. Water containing dissolved salt as effluence. Excess bleeding can also result. यहाँ पे excess bleeding, यदि bleeding होता है तो भी इश्यू है। So how to prevent it?
यूज क्लीन सॉल्ट फ्री वाटर। ऐसा संभव तो नहीं है, बट इसको करना चाहिए। यूज क्लीन सॉल्ट फ्री वाटर। नाउ अभी आपने देखा सर ने बहुत सारी चीज़ें बताई हमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में, अनदर टेक्निकल टर्म्स, कौन सा सीमेंट कहाँ यूज़ करना है, ही गिव सम क्लूज। Yes, so I'm going to ask him some questions so that we can aware more. And yes, also he told us about the defects of cement, in which he talked about dusting and blistering and many more, honeycombing also, as well as he was talking about spelling and how we can take preventions from these defects and also how to repair these defects. So he was talking about these things. And yes, so whenever you are going for any site visit or somewhere where you are going for to see the construction in any building, so you need to know then how to choose cement and which type of cement for where. So generally बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं कि उन्हें कैसे पता लगे कि किस जगह पे कौन सा सीमेंट लगना है. So how to choose a cement? बेसिकली देखो तो हम किसी भी सीमेंट को तो ऐसे रिकमेंड कर देते हैं कहीं पे करने के लिए, बट बेसिकली डिपेंड अपॉन द C2S एंड C3S, C3S, C2S एंड अदर जो कंपोनेंट्स मैंने अभी बताया उसको देखना बहुत जरूरी है। और बेसिकली फाइनली बोले तो हमें ब्लेंडेड सीमेंट को, आई थिंक जहां पे मास कंक्रीटिंग का हो वहां पे हमें ब्लेंडेड सीमेंट को लेना चाहिए। आई थिंक PPC इज बेटर सीमेंट। सो जहां पे हमें लगता है कि समय ज्यादा हो, यहाँ पे हम PPC को यूज कर सकते हैं। जहां पे लगता है कि हमें समय कम देना चाहिए और हमें प्रोजेक्ट को जल्दी से कवर करना है, तो वी कैन चूज द OPC और फास्ट सेटिंग सीमेंट या क्विक हार्डनिंग सीमेंट ऑल्सो। So I depend upon the situation. In general, B&F sector also using the PPC cement. B&F means building and factories. बिल्डिंग एंड फैक्ट्रीज जो भी कंस्ट्रक्शन होते हैं उसमें बेसिकली PPC को हम यूज करते हैं और रिकमेंड भी करते हैं। बेसिकली ये है। ओके एंड सर स्ट्रेंथ वाइज कैसे चूज करें सीमेंट को कि आपको स्ट्रेंथ चाहिए, आप आरसीसी वर्क कर रहे हाँ। हैं, आप प्लास्टर वर्क कर रहे हैं या आप रूफिंग के लिए कुछ काम कर रहे हैं, तब आप कैसे चूज करते हैं सीमेंट? बेसिकली स्ट्रेंथ को चूज करने के लिए तो जैसे द लैब प्रोसेस, लैब प्रोसेसिंग है। को किसी भी स्ट्रेंथ को इन जनरल सबसे पहले तो डिजाइन पे डिपेंड करता है कि डिजाइन में क्या लिखा हुआ है। लाइक प्लास्टर के लिए नहीं, इन जनरल देखें तो प्लास्टर के लिए रेशियो होता है 1:4 एंड 1:6 और 1:1, 1:2, डिफरेंट इनके रेशियोज होते हैं। उस रेशियो पर डिपेंड करता है कि हमें कौन सा प्लास्टर कहाँ यूज करना चाहिए। इट इज नॉट डिफाइंड विद स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ से हम कंक्रीट को जज कर सकते हैं। जो कंक्रीट हम कराते हैं लाइक बीम, कॉलम्स एंड स्लैब जो भी है, या फाउंडेशन जहां पे कंक्रीट का पार्ट है, इनके लिए भी स्ट्रेंथ का होता है। तो वी कैन गो द लेबोरेटरी टेस्ट और वहां पे हम सीमेंट को टेस्ट करके स्ट्रेंथ को डिसाइड करते हैं एज ए थ्रू डिजाइन मिक्स। बेसिकली डिजाइन मिक्स से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। ऐसे हम नहीं बता सकते कि नहीं इस सीमेंट को यहाँ लगा दो इसकी इतनी स्ट्रेंथ आएगी, बिकॉज सीमेंट इज ए हाइड्रोलिक मैटर, not giving the strength, and it gives the strength if added in the coarse and fine material along with the waters. यदि हम पानी के साथ कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट को लेते हैं, देन सीमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है बाइंडिंग के लिए और उसको स्ट्रेंथ के लिए टाइमिंग होता है जो टाइम पे स्ट्रेंथ उसको गेन करता है, बट डजंट इन्वॉल्व द सीमेंट इन स्ट्रेंथ डायरेक्टली। Okay sir, Basically, and also nowadays many type of color cement available in market, तो उसके ऊपर एक बार आप थोड़ा सा yeah. लाइट डालेंगे? कलर सीमेंट बेसिकली आजकल जो समय है जस्ट डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन करना होता है, देखना पड़ता है
Uh, so choose the color cement, but thick pigment, and it will be the added in cement. But it is not in a part of the manufacturing. Uh, we cannot add in the manufacturing process of the cement. सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हम कहीं पे भी कलर को नहीं ले सकते। इसको हम कहीं ना कहीं इसको हम एक स्मॉल फैक्ट्री लगाते हैं, देन हम उसमें कलर को सीमेंट के साथ ऐड करके उनको हम जनरेट कर सकते हैं कि हमें व्हाट नीड, जैसे अभी पेंट के साथ होता है, हमें के लिए करती है दो तीन तरह का जो है पेंट की शॉप पे जाकर के हम वहां देखते हैं, देन हम कलर चूज करते हैं और उस कलर को मेक करते हैं। तो लाइक वी कैन कलर एडेड इन सीमेंट, सीमेंट में हम कलर को ऐड करेंगे, देन वो कलर सीमेंट होता है बेसिकली। बट इट इज नॉट अफेक्ट टू द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट और सीमेंट, Okay. उसका कोई अफेक्ट नहीं आता बेसिकली। सो कलर सीमेंट वी कैन प्रोड्यूस इट Okay, एज अ sir. लोकल लेवल। So here sir talked about a lot of things about cement manufacturing process and defects, also how to prevent it. And yes, in the last he told to you that the key points or the the things that you need to remember whenever you are going on any site, any construction site where work is going on. So be with me to know about more and more about architecture, about construction, and about the world. Thank you so much to be with me. And don't forget to press the like button. Thank you so much.